It's time to greet you. Assalamu alaikum and good afternoon. We are live round from this beautiful and scenic center of Shalbugh, Ganderbal, and this match is being played between the two teams. Bird Enterprises taking on Bastion Cricket Academy, Ganderbal. The big match of the summer, terrific weather, and the two terrific teams are gonna lock on horns here at the center. We definitely love to take point from a colleague here in the com box, Nazir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सभी व्यूवर्स को हार्दिक अभिनंदन। शेख नज़ीर और साथी कमेंटेटर इस समय हमारे साथ बने हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूवर्स को स्वागत करना चाहेंगे इस शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 के सेमीफाइनल मुकाबले में। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि खेला जरूर अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करने की कोशिश और सफल हुए, लेकिन रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया। आकर्षक रोमांचक स्थिति समय बीच मैदान में बनी हुई। Nazir, the two openers out in the middle, Irfan and Adil, both are on it. Irfan is up the mark with that wonderful shot through the backward a point, and followed by Adil, who is yet to get up the mark. Adil lefty is pacing from the far end as per our com box is concerned. Adil lefty comes in, crosses umpire, and those short one outside the off stump, and he wanted to cut that one, doesn't get hold of that one. Nazir beaten all ends. A batsman wanted to go over backward a point, doesn't get success, and ball resting in the hands of wicketkeeper. जी बिल्कुल, और इसे प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है और एक आकर्षक विश्वसनीय शुरुआत की आवश्यकता। और किस प्रकार से यहां से ये दोनों बल्लेबाज, अगर बात करें इरफान और आदिल की, तो एक मजबूत और ठोस आधारशिला देनी होगी अपनी टीम को। इस बार बाएं हाथ से ये गेंद और जगह मिली, खेला स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दर्शनीय स्टॉक शुरुआती ओवर है और बेहतरीन प्रहार करते हुए 4 रन अर्जित किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 5 पहले ओवर में बगैर नुकसान के। Well, that was audacious shot, stepping bit leg side and then sending that one over extra cover. Knows the fielder that they are up inside the 30-yard and taking full toll of that bad delivery outside the off stump, and he rocks back and sends that one over extra cover to the boundary. That boundary takes the score to 8 for the loss of no wicket. Very never. रन हो चुके हैं, क्षमा कीजिएगा, पहले ओवर में। और इस तरीके की खराब गेंदबाजी से बचना होगा। शुरुआती ओवर में संयम रखना होगा, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी वहां पर। ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद हालांकि वहां पर नो का इशारा अंपायर द्वारा, तो दोहरे अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ 10 पहले ओवर में। और फ्री हिट का इशारा, तो कहना चाहिए कि शुरुआती ओवर में हालांकि एक प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को मिली है, लेकिन अभी तक कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाए वहां पर गेंदबाज बल्लेबाज पे। Well, exactly. He's trying to bowl outside the off stump and he's trying to castle the batters outside the off stump, but the bat bad balls, and that's in the air. This should be the first blood. Adil underneath, hold, but था ऊपरी सिरे पे लगने के बाद गेंद हवा में चली गई, कैच कर लिया, लेकिन फ्री हिट, और कहना चाहिए फ्री हिट का कोई लाभ नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज। शुरुआती ओवर है और कहना चाहिए कि एक आकर्षक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहां पर गेंदबाज को। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज भी सामने। इस बार अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, गैप में पीछे खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड किया जाता, संभवतः 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी शुरुआत दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और आशा की जा रही है क्रिकेट के समर्थक दीवाने इस ऐतिहासिक मैदान में, दरियाई सिंध के किनारे बसा हुआ खूबसूरत और ऐतिहासिक मैदान अपने आप में एक कहानी दर्शता हुआ। Valley figure to the two teams of today's match. We definitely love to throw it out Bastion Cricket Academy guys. Harun Khan, the household name in the valley, followed by Junaid Qazi, Salim Dad. They got Zaid, and then there is Farhad, and there is Sajjad Mir. Robbie is their Ishtiyaq Ilahi, the big name of the valley, and followed by Aqib Manzoor, Adi, and Faizan, and there is Adil Zahoor also. He's number 12 for today's match. Well, the score remains 11 for none up to the completion of over number 1. Nazir would definitely love to see crowd building up around the park, because this is the big semi-final coming your way
The match where we got the likes of Ishtiyaq Robi, Harun Khan, Adil Zuhur, the big guns from this very side. The other side is also poised up and equally poised up for this all-important semi-finale number 2. जी बिल्कुल सेमीफाइनल मुकाबला और कहना चाहिए कि एक आकर्षक रोमांचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला होने की आशा और उसी मुद्रा में इस समय बीच मैदान में चलता हुआ दूसरे ओवर की शुरुआत होती ही पहली गेंद खेला जरूर नहीं, वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में करीब करीब 31 डिग्री का तापमान और क्रिकेट के वातावरण की अगर बात करें तो बेहतरीन, हालांकि इस समय पसीने से तरबतर शुरुआती ओवर है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा अगर हम दर्शकों की बात करें तो अच्छी खासी संख्या इस मुकाबले का आनंद लेती हुई एक बार फिर अपने व्यूवर्स का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद पर छकाती हुई वहां पर बल्लेबाज को और सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में अच्छी गेंदबाजी और इसी और लंबाई के साथ गेंदबाजी कर रही होगी वहां पर यदि कुछ प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो। Well, definitely they have to bowl in that corridor of uncertainty and let the batsman commit the mistake, and he is trying to keep ball in that very corridor. It is Zaid bin Nazir is bowling and Nazir is sweating in the com box. You can understand how difficult the weather out here is today. It is scorching heat out here at the centre. Would like to thank all the beloved viewers. Thank you for joining us on JK Sports Time this afternoon. Next one comes charging down the track of the outside edge. Will this be out? No, it doesn't. After a couple of bounces down towards the third man, and there is a possibility of another single. Score moves to 12 for none. We are in over number 2. Mohammad Iqbal Sheikh, Merajuddin and Manzoor and Miraj Qadri and others are watching this live broadcast. This broadcast is brought to you by Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Arco Fenestration, manufacturers of UPC, UPVC doors and windows, and Shining Star Papur, followed by MHM multi-brand fashion store. In the meantime, second over is in progress. Zaid bin Nazir is operating, and on strike is batsman Adil. And it comes down the track, wanted to hear that one, doesn't get success on that occasion. That's a dot delivery. Good line and length on that occasion, and batsman wanted to heave at it but doesn't get success in the end. That's a dot delivery. So no run. This score remains 12 for the loss of no wicket. We are in over number 2 of the match. बिल्कुल दूसरा ओवर इसमें प्रगति पर है और अब तक 12 रन बना लिए हैं बॉर्डर एंटरप्राइजेज की टीम ने। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में बाएं हाथ का बल्लेबाज आदिल सामना करने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि खेला जरूर वही निचले सिरे पर लगने के बाद फील्ड तो हुई लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। एक रन और खाते में जोड़ता हुआ और कुल योग इस समय 13 रन दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के। अच्छा वातावरण और बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन, कांटे की टक्कर का यह मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत सेमीफाइनल। Well, the second semi-final of Shalbugh Super League, credit must be given to the sponsors and the organisers of the tournament. These are the guys who are putting in a lot of effort, and it's their 100%. It's their sweat that has made it possible to conclude the tournament in a time-bound, spirited manner. In the meantime, bowler continues to bowl from the far end as he comes in, crosses umpire and bowls. Oh, beautifully bowled, moving away, shaping away off the deck. That's a wonderful delivery. That's a treat to watch, and that sight is lovable to every bowler, Nazir. जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार और विश्वसनीय प्रदर्शन समय गेंदबाजी में। शुरुआती ओवर और इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता है क्योंकि अगर आप शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाज पर एक प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो आपको इस फील्ड के अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी। बिल्कुल उसी मुद्रा में कार्य करते हुए दोनों गेंदबाज 2 ओवर पूरे हो चुके हैं और संभवतः 12 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर नुकसान के आदिल और इरफान की जोड़ी इस समय बीच मैदान में इस मुकाबले में इस प्रयास होता हुआ और कहना चाहिए आकर्षक मुकाबला चारों ओर अगर नजर दौड़ाई जाए। आकर्षक खूबसूरत ऐतिहासिक यह मैदान सिंध के किनारे बसा हुआ और अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि समेटे हुए और जिस प्रकार से सभी दर्शक धीरे धीरे इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं और आशा की जा रही है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेंगे। आकर्षक मुकाबला और यह दूसरा सेमीफाइनल शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत बर्ड्स एंटरप्राइजेज और बास्टन क्रिकेट अकेडमी के विरुद्ध चलता हुआ। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस बार जबरदस्त प्रहार, जैसे ही गेंद रडार में मिली और उसको उठा दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। आकर्षक जन्नाटेदार स्ट्रोक और 6 रन अपने खाते में जोड़ते हुए कुल योग पहुंचाया 18 रन तीसरे ओवर में बगैर नुकसान के। अच्छी शुरुआत दोनों बल्लेबाजों द्वारा।
Exactly, they're underway in style. They would definitely love to go downtown in this stand. That's a wonderful shot. That was a dis stand, stepping bit leg side and puts that one to perfection and takes that one on and sends that one over the mid wicket. Corner is the perfect area and played it to perfection. That's a 6, and that 6 more takes the score to 18 for the loss of no wicket. Nazir, these two batters, they are sent on a mission and they would definitely love to go hammer and tonk all the way, and because this is the big match, a match worthy of the semi-final, and you have to make sure that you put runs on the board. जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुकाबला और ऐसे में उसी प्रकार से अगली गेंद को उठा दिया और गेंद निकल गई एक टिप्पा खाने के बाद संभवतः सीमा रेखा से बाहर। जी हाँ, क्षमा कीजिएगा, एहसास लगा, हालांकि बहुत बड़ा ये मैदान है और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 मात्र 30 ओवर में बगैर नुकसान के। और जिस शैली के अनुरूप है यहाँ पर बल्लेबाज आदिल, उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं। आकर्षक विश्वसनीय प्रदर्शन इसमें बीच मैदान में चलता हुआ। That was another beautiful shot, audacious one, fearless, and that's gone over the back quarter point. Not easy for the batsman to go hard at it, but he has sent to that one packing to perfection, and that's another one, another beautiful stroke, and half a dozen on that occasion. Score moves to 24 for none. We are in over number 3 of the match. Adil Apti continues to bowl. He has conceded 2 sixes. Oh, that is a wonderful shot, beautifully done, executed to perfection, up to back foot, and passed the ball all the way down to the boundary. That sped past up the turf all the way down to the boundary. 4 more, it's 28 on the board for the loss of no wicket. We are in over number 3. Adil reeling under the serious hammer and pressure at the moment. जी बिल्कुल, बेहतरीन प्रदर्शन, इस बार बैकफुट पर जाकर सीधे बल्ले से उसको निकाल दिया और 4 रन अर्जित करते हुए अपने लिए और अपनी टीम के लिए और कुल स्कोर पहुंचाया 28-29 ओवर में। इस बार फिर खेला, ऊपरी सिरे पे लगती हुई गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, लेकिन उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और निश्चित तौर पे 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 29 मात्र 30 ओवर में। और किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस प्रकार की शुरुआत, कहना चाहिए आदिल जिस प्रकार से आग उगल रहे हैं शुरुआती ओवर में, बेहतरीन और एक उपेक्षा से भरी पारी समय खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। और अब सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल लेफ्टी के लिए 29 बगैर नुकसान के मात्र 30 ओवर में। बर्ड इंटरप्राइजेज इस बार बल्लेबाजी करती हुई और इस बार खेरा, फिर घूम कर गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। लगातार इस समय चौकों और छक्कों की बरसात होती हुई इस सेमीफाइनल मुकाबले में 35 हो गया है कुल योग बगैर नुकसान के मात्र 30 ओवर में। Well, it was in the red, had to be put away, pulling it to perfection. Another wonderful shot. Credit must be given to the left-hander. He stands tall, pulling that one authoritatively down to the backward skellig boundary. 6 more. Score moves to 34 for the loss of no wicket. 3 done. Expensive continues from Adil Lefty. He's under the serious hammer at the moment. Nazir, he has to make sure that he's going to bowl in the right areas. An ideal area for the pacer is to bowl in the corridor of uncertainty. जी बिल्कुल, हालांकि इस बार जगह देते हुए बल्लेबाज को इस बार अच्छी गेंद ऑफ मिडल पे आती हुई खेला जरूर, 1 रन पूरा कर रहे हैं वहां पर दोनों बल्लेबाज। और जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम, निश्चित तौर पे अच्छी 2 विकेट के बीच में और 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 36 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और अगर वर्तमान रन गति की बात करें तो 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय इस सेमीफाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी होती हुई। और बर्ड्स इंटरप्राइजेज की अगर बात करें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में अब तक 36 रन बने हैं बगैर नुकसान के। आदिल और इरफान की जोड़ी इस समय बीच मैदान में बनी हुई प्रारंभ कर चुकी है। और क्या कहना है इस जोड़ी का, किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। Well, Irfan and Adil, they're going berserk. They're not going to hold themselves back. They're going to go up to the bowlers. We'll have to wait and watch. 4th over beginners. That's a good ball and it's a no ball. Another blessing in disguise for the batsman. It is a kind of big blunder and he has to bowl that. He has to re-bowl that to be precise, and that's going to be a free hit. जी बिल्कुल, और एक और नो वहां पर, और इस प्रकार से बचना होगा। शुरुआती ओवर्स में अगर आप इस तरह की दिशाहीन गेंदबाजी नो बॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति जो बल्लेबाज पर आप बनाने की कोशिश में है वो अपने आप छटती हुई। और देखना है इस प्रकार से इस ओवर में किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं। ये गेंद इस बार गति में परिवर्तन, पहले से बांप लिया था और उसको उठा दिया सीमा रेखा से बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा और 6 रनों का इशारा आता हुआ एक और दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन खाते में जुड़ते हैं, लेकिन इस बार इरफान के खाते में और कुल योग पहुंचा है 41।
41 हो गया है कुल योग। लगातार बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। Well, Neil is down on one leg and clears that infield over the fielder there at mid-wicket area, all the way down to the boundary. 6 more, score moves to 42 for the loss of no wicket. We are in over number 3 of the match, and this is the second semi-final of Shalbugh Super League for year 2022, as we are in over number 3 of the match. Comes and there's that one, wrapped him on the pad, he wears that one on his pad. No shout for LBW, and he survives that another scare. This broadcast is brought to you by Anthem Sports India, Arco Fenestration, Shining Star Pampur, Fashion Fiesta, and MHM Multi-Brand Fashion Store. In the meantime, Pacer continues to bowl from the forehand. Left-hander is on strike. He's waiting for the bowler. Let's take a quick look of the field with one slip in place. Third man backward a point, cover point. No, a short extra cover, then followed by mid-off, way down the leg side. Nazir, we were talking about that. You have to be disciplined out there with the ball. Look at that one. Sprays down the leg, another wide. जी बिल्कुल, लगातार अपनी दिशा और लंबाई में नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और जिसके चलते ज़्यादा अतिरिक्त गेंदें इस ओवर में चली जा चुकी हैं। तो इस प्रकार से बचना होगा। मुकाबला बड़ा है और यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी और बिल्कुल एक सहजता के साथ, संयम के साथ गेंदबाजी करने। So you mean that margin of error is less? जी बिल्कुल, और गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस बार फिर दिशाहीन गेंद लेग स्टंप पर और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। लगातार इस समय कहना चाहिए कि दिशाहीन गेंदबाजी और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय होगा अगर हम बात करें बास्टन क्रिकेट एकेडमी के लिए। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ लगातार स्कोरबोर्ड को गतिशील रखा हुआ है और इस समय जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, चाहे आदिल बॉर्डर हो या फिर इरफान हो, बहुत ही बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन अब तक का देखने को मिला है इस शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। इस बार अच्छी गेंद पूरी तरह से गेंद की लाइन में आकर के खेला जरूर, वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में। 33-34 डिग्री का तापमान और लगातार जेके स्पोर्ट्स टाइम के दुनिया के सभी व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए और बहुत बहुत आभारी और अभिनंदन करना चाहेंगे। 46 चौथा ओवर में प्रगति पर और 46 रन अब तक बना लिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने बगैर किसी नुकसान के। बड़ा मुकाबला और बेहतरीन ठोस और मजबूत आधारशिला दोनों बल्लेबाज इसमें अपनी टीम को देते हुए इस ओवर में अगली बार। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला जरूर, पीछे खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड किया जाता तब तक 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और कुल योग पहुंचा 47 रन चौथे ओवर में बगैर नुकसान के। बेहतरीन शुरुआत और यहां से हालांकि एक विकेट की आवश्यकता है। किस प्रकार से यहां से गेंदबाजी होगी, क्या योजना होगी और क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात है। लगातार इस समय कप्तान के लिए चिंता का विषय बने हुए क्योंकि शुरुआती और प्रारंभिक जोड़ी धीरे धीरे से एक बड़ी साझेदारी की ओर अग्रसर होते हुए 47 4 ओवर की समाप्ति बगैर नुकसान के। इस समय बोर्ड इंटरप्राइजेस की टीम इस दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। They laid a strong foundation for a big score, but they have to carry on because you know the fact that this is the game of glorious uncertainties. Well, all the beloved viewers, thank you for joining us on JK Sports Time this afternoon. You can send us the digital token and the coupon of love via digital stars. So carry on. So warm up a bit and start sending in the stars. We'd definitely love to include your comments. In the meantime, fresh or beginners from the forehand. He comes on to bowl on middle and leg, worked away with ease, will get a single nonetheless. 47 for none here in over number 5 up to match. Nazir, you have to be perfect out there in the middle because never dies. This is the shortest format ever we have witnessed of the cricket, and you have to be right on money, on target. You can't afford to provide any sort of width at any instant of the game. जी बिल्कुल, अगर आप लगातार इसमें बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका देंगे तो बिल्कुल यही हश्र होगा और जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। इस बार अच्छी गेंद खेला जरूर, पीछे है खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो होकर के विकेट कीपर के दस्ताने में आती। 1 रन और लेने का समय और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद इसमें बोर्ड इंटरप्राइजेज की टीम। It is Adil Border to be precise, the batsman out in the middle. जी बिल्कुल, Adil, big man of the valley, the danger man out in the middle. So that's why we saw that going berserk, going downtown, and in this stand kind of a shots we witnessed so far. It's because of that man out in the middle, and he loves to go downtown. He loves to give himself charge. He shimmies down the track, and aggressive batting we have seen from this man, and that's why we see the score 47. We are just in over number 5.
48 है इसमें कुल जोग। क्षमा कीजिएगा, 5 ओवर की समाप्ति के बाद और इरफान और आदिल बॉर्डर की जोड़ी समय बीच मैदान में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है और जिस प्रकार से शुरुआत दी है आज अपनी टीम को कहना चाहिए आकर्षक और रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में। हालांकि पहली पारी चल रही है, निर्धारित 20 ओवर का कोटा, दूसरा सेमीफाइनल इस समय बीच मैदान में, यानी कि इस खूबसूरत ऐतिहासिक शालबुग के स्टेडियम में। और अगर हम इस मुकाबले इस मैदान की बात करें तो मैं समझता हूं कोलकाता का ईडन गार्डन शायद उसकी याद दिलाता हुआ। Well, if we look at the dimensions of the Santa, I can simply say we are in Melbourne. But at the moment we are in Kashmir, and this is Shalbugh to be precise, which belongs to the central Kashmir, and the district belongs to Gaunderbal. And in the meantime, we'll have to wait and watch 48. We get a breather here in the com box. Let me tell you one more thing. Some of the blood viewers on JK Sports Time, they want to include, they want their comments to be included in the live commentary. Sorry, all the blood viewers will definitely love to include all the comments, but we are in a kind of difficult position at the moment because it is quite overcast here and it is humid and hot out here at the sun at the moment, and that's why we are unable to carry on. It is Turk Zaid and Wasim Khan, Sheikh Salman Parvez and others are watching. Thank you for your love and support. Keep watching this wonderful coverage. Harun Khan is playing for Bastion Cricket Academy, followed by Junaid Qazi, Salim Dar and Zaid bin Nazir. Farhad is there, Sajjad sir is there, Robbie Ishtiaqilai is also playing, Aqib Manzoor and Adil is there in the playing 11. Faizan is also, and Adil Zuhur makes his way into the side. Javed Wani, Manzoor Ahmed and Shaukat Rath writes in. Thank you all the blood viewers for joining us, and it's you Allah which adds a kind of fuel to our tank, and we love to continue every now and then with a live broadcast. नए ओवर की शुरुआत होती हुई और पहली गेंद काफी ऑफ स्टंप से बाहर और बाहर की तरफ निकली और संभवतः ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता 49। पारी का ये 6वां ओवर प्रगति पर और बॉस्टन क्रिकेट एकेडमी जिन्होंने आज टॉस हारा के समय क्षेत्र रक्षण करते हुए, लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत दी आज टॉस जीतने के बाद द बोर्ड्स इंटरप्राइजेज की टीम ने, कहना चाहिए बहुत बड़ा महायुद्ध क्रिकेट की भाषा में अगर बात करें, दूसरा सेमीफाइनल शालबुग सुपर लीग 2022 का। एक बार फिर ये गेंद और बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, बल्ला जरूर चलाया लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद विराम करते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। 49। मीर आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे और हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि और अन्य लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले का आनंद ले सकें। और यदि हमारे व्यूअर्स चाहें तो हमें डिजिटल स्टार्स के जरिए भी अपना प्यार और प्रेम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस ओवर में अगली बार गेंदबाज तिरछे बॉलिंग रनअप के साथ फिर ऑफ स्टंप पर जगह दी और सही नसीहत, गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन मात्र 6ठे ओवर में बगैर नुकसान के। विश्वसनीय शुरुआत दोनों बल्लेबाजों द्वारा। Well, a wonderful shot, stand tall and delivers that punch, half cut down to the boundary, super cover boundary for 4 runs, and that brings up the 50 and much awaited 50 of their side. In the way they would have definitely loved to put forward that 50 in style, and they have been able to pile up 52 to be precise. We are in over number 6. Adil Border and Irfan left here out in the middle. Border is playing the innings of his life. He has played so many innings. That is one such inning. And Asif Rashid, thank you for your love, for sending in the stars. You can continue sending in the stars. We're eagerly waiting for your love. Shaukat Rathar and Lala Makbul, walaikum salam, and all other beloved viewers on JK Sports Time. Wherever you are, stay there. We are here to tell you the entire story of this intriguing match underway here at the center of Shalbugh. जी बिल्कुल, इस बार ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद गेंद हालांकि थोड़ी सी बाहर निकली, खेला जरूर वहां पर क्षेत्र रक्षण तैनात, उन्होंने कोई गलती नहीं की और गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर टिका हुआ 53 रन, ये 6ठा ओवर प्रगति पर है और शुरुआत बेहतरीन, कहना चाहिए आकर्षक और विश्वसनीय शुरुआत प्रारंभिक जोड़ी ने, चाहे वो आदिल बॉर्डर हो या इरफान की जोड़ी हो, बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। ये गेंद इस बार फिर ऑफ स्टंप पर जगह दी और गेंद को निकाला सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Well, Nazir, don't you observe? It's raining boundaries and sixes here at the Santa. We're in for a run fest. Another wonderful game underway. Diplop viewers, where are you? Join this way, come this way, hop tables this way, and find out this fizzled out campaign here at the Santa between the two big teams of the valley. We got Bastion Cricket Academy locking horns with Bird Enterprises. The two teams are really up to the mark. They're evenly poised at sides for this wonderful semi-final. But look at
this kind of enterprising innings coming your way on JK Sports Time. Look at the batters, Irfan Lepti and Adil Bauder. जी बिल्कुल, और इस बार इस गेंद को खेला, हालांकि वहां पर आपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश और सफल भी हुए बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी टिका हुआ 57 बगैर नुकसान के। ये छठा ओवर इसमें प्रगति पर है और कहना चाहिए कि बहुत ही तेज तरार शुरुआत दोनों बल्लेबाजों द्वारा, दोनों छोर से, इरफान और आदिल बॉर्डर द्वारा। इस ओवर में आखिरी बार दाएं हाथ से ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर हालांकि जगह मिली, लेकिन पूरी तरह से गेंद की लाइन में नहीं आ पाए बल्लेबाज। खेला जरूर, वहां पर फील्ड हुई बगैर किसी रन के। ओवर पूरा हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 57 बगैर नुकसान के। Ahal Imtiaz, Imad Zubair, Ejaz Ahmed and Turuk Zaid Khan and Tahir, these are the beloved viewers on JK Sports Time. Tahir, listen in. Once again, I would definitely love to throw out the names in the playing 11 of Bastion Cricket Academy, followed by Harun Khan, then Junaid Qazi and Salim Dar, followed by Zaid bin Nazir, Farhad, Sajjad Sir, Robbie is there in the playing 11, and Aqib Manzoor makes his way in, and followed by Adil, Faizan and Adil Zuhur. These are the guys who are playing for Bastion Cricket Academy. These are the guys who are representing their side. Thank you Nazir, and thank you Sajjad Ahmed and Tahir Nazir, all the beloved viewers. Thank you for your luck. Keep sending in your comments. We would definitely love to include. Umar Bukhari writes in. And Shaukat Qureshi is watching. Look at Umar Bukhari, he writes in something. And someone, Mohammad Salim and Rai Mudassir wants to know the playing 11. Well, you might have heard the playing 11 of Bastion Cricket Academy, and we'll update you shortly the other score and the other playing 11 of Bird Enterprises in a while. Adil Zuhur begins the pressure from the foreign, changing the bowling. And he's going to bowl for the first time. He's going to operate. He's going to operate for the first time. Comes on to bowl. That's a good ball. Play back to the ball. Won't be any run. Dot delivery to start with. Nazir. जी बिल्कुल, और यहाँ पे परिवर्तन के तौर पर गेंदबाज को लगाया गया है। ये देखते हुए कि इस साझेदारी को तोड़ा जाए और क्या इसमें सक्षम हो पाते हैं अथवा नहीं। 58 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद लपेट कर मारा, पीछे है खिलाड़ी लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर और निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो एक और दर्शनीय स्ट्रोक आदिल के बल्ले से निकलता हुआ, इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन छठे ओवर में बगैर नुकसान के। क्या कहना है इन दोनों बल्लेबाजों का, और बहुत ही विश्वसनीय तेज तरार शुरुआत तब तक देखने को मिली है इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। Well, Shafat Hussain, exactly, he's among the playing 11. And keep joining JK Sports Time. Keep coming this way and find out wonderful coverage coming your way. Adil Bauder is playing. He's going berserk. And the score moves to 62 for none. We are in over number 6 of the match. Adil Zuhur, third time, comes on to bowl the next one. And he wanted to launch that one. It was in that very arc to be put away. But doesn't get success. Dot delivery. And he has to bowl the next one. जी बिल्कुल, और इस समय हालांकि 62 रन बना लिए हैं छठे ओवर में। धीरे धीरे से एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर रहे समय टीम बर्ड एंटरप्राइजेज। अगली गेंद को जगह दी और पुल के अंदाज में उसको निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Look at that one. It's just going and gone all the way for 6. Terrific shot. Wonderful stroke. Thank you, Advocate Hilal, Ear Mudassir and others. Advocate Hilal is watching. Thank you for your love. And Turuk Zaid Khan is also watching. Nazir, with that score propels to 68. Fanan, we are in over number 6 of the match, is it? Well, somebody writes in. He's talking about that Urdu commentator Turuk Zaid Khan. Don't worry, Nazir. Delivery, and Adil Zuhur believes that there was a nick, but we can't say anything because we don't have those things available here to decide whether that found an edge or not. But somebody writes in, Jabed Ahmed and Tahir Manzoor. All the beloved, thank you for joining us on JK Sports Time this afternoon. And another one moving away, shaping away up the deck, and batsman can't do very much. He wanted to lift that one up all the way, but doesn't get success. Bilal Abdullah and Luban Ahmed and Mir Rasik, all the beloved, thank you for your love. Bilal Abdullah, thank you once again for your love in sports. Score moves to 68 after 6 done. It's 68 for the loss of no wicket. We are going to be in over number 7 of the match. And somebody writes in, all the beloved viewers are sending us the love, and it gives us a kind of a sheer joy here in the com box, Nazir. And we are celebrating, even we are sweating it out here in the com box.
And look at the hankies going on, and we are trying to soak it, and we are trying to use hankies to soak away the sweat, but it's quite difficult at the moment. Well, Gulzar Rishi writes in, Mirajuddin, Manzoor Bhatt and Farooq Taylor. All the beloved viewers, Walaikum Salam on JK Sports Time this afternoon. Ian Khan writes in, treat to watch. Thank you. And there is some other beloved viewers. Thank you all the beloved viewers for joining us. This broadcast is brought to you by Arco Fenestration, followed by Anthem Supports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, and MHM Multi Fashion Brand Store. And we're going to be number 7, 6 ton, 68 for none. Well, we definitely love to include the names of the organizers of the tournament. They are doing wonderful job, and they have been able to fetch this tournament and take this tournament to the next level. And we are very close, and we are nearing that very day for which everyone is waiting. That is the grand finale coming your way this Sunday. Join us on that very day for the grand finale. Will be coming your way from this very center, and the team which will win today will make it to this make to the finale of Shalbugh Super League. Thank you all and others for your love and support, and keep sending in the digital stars. Mehrajuddin writes in, please name myself Munawwar Tanveer. You can find me through Munawwar Speaks on Facebook, and alongside me my colleague Nazir Ahmed, and he's doing job. And Veer Irfan writes in Urdu, his name is Nazir sir, he is alongside me in the comment box. Thank you. नए ओवर की शुरुआत होती हुई और पहली गेंद को खेला जरूर, वहां पर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। 68 अब तक का हो चुका है स्कोर। ये पारी का 7वां ओवर से प्रगति पर है, और जिस प्रकार से लगातार यहां पर चहलकदमी करते हुए स्कोर बोर्ड को गतिशील रखते हुए दोनों बल्लेबाज, और कहना चाहिए कि अब धीरे धीरे से इनकी निगाहें जमती हुई और एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर टीम बर्ड्स एंटरप्राइजेज की। इरफान और आदिल, सकलैन मुश्ताक हमारे साथ जुड़ते हुए इरशाद खान के साथ, और तुर्क ज़ैद खान सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। जुबैर मकबूल भट्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, और बहुत बहुत स्वागत सभी व्यूअर्स का। बने रहिए हमारे साथ। इश्तियाक रॉबी परिवर्तन के तौर पर उन्हें लगाया गया है। अब किस प्रकार से वे गेंदबाजी करेंगे, एक कड़ा प्रश्न पूछा जाएगा यहां पर गेंदबाज द्वारा, लेकिन सामने है अगर बात करें आदिल बॉर्डर की। पहली गेंद इश्तियाक रॉबी की, और इस बार अच्छी गेंद सीधे मिड स्टंप पे आती हुई उसको सम्मानजनक रूप से खेला, बैट और पैड मिलाकर बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी टिका हुआ 68। 7वें ओवर में बगैर नुकसान के ये जोड़ी, इस समय प्रारंभिक जोड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। इश्तियाक की गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर जगह मिली, उठा दिया उसको सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक और 6 रन खाते में जुड़ते इस समय आदिल बॉर्डर के, और कुल योग इसमें पहुंचता हुआ 74 7वें ओवर में बगैर नुकसान के। Well, Mudassir Alam, thank you for your love, but that was a wonderful shot. Nazir, look at that one. That's gone a country mile all the way down to the mid-on boundary. Huge enough. And all the way 6 more, and he fetched a 6 out of that one, and you call it in Euro language Lipeta, and that was a wonderful shot. I have to use the word patch of that one from outside the off stump and down towards the corner area for 6. जी बिल्कुल, और बेहतरीन प्रदर्शन अब तक का दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और खासकर जिस प्रकार से आदिल बॉर्डर इस समय गजब के फॉर्म में है, और पूरी तरह से कहना चाहिए अगर उनके स्ट्रोक्स को हम बात करें तो अच्छी तरीके से वहां पर गेंद को मिडल करते हुए। इस बार इश्तियाक रॉबी की गेंद, और इस बार फिर ऑफ स्टंप से इसको लपेटा, हालांकि गेंद जा रही है खाली क्षेत्र में, पीछे है खिलाड़ी, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 78 बगैर नुकसान के। 39 पे नाबाद है आदिल बॉर्डर, धन्यवाद स्कोरर, और सिर्फ 11 रन दूर आदिल बॉर्डर अपने इस अर्धशतकीय पारी से। Well, Adil Border is playing another wonderful innings. What a knock that has been, really a top-notch. Umar Miraj, Turuk Zaid Khan and Huzaif Khan, thank you for your love. But not able to understand what are you talking about. But I think it's wonderful here in the comment box. And Huzaif Shabir and John Apna. Walaikum salam, all the beloved viewers. Next one, Adil Border, equally to the task. Guide is that one, but straight down to the field. No run there. Wide slip in place. Nazir then followed by Gully back with a point. Short extra to the sweeper on the boundary, and mid off wide-ish on the boundary. On the onside there is mid on, wide-ish on the boundary. There is mid wicket on the boundary, and changing the bowling. Ishtiaq Rabi completed his over. That was too expensive to be precise at this crucial juncture. You're leaking runs like that, it is a kind of a blessing in disguise for the batters, but you're giving a chance to your opponents to stand tall and take that at an ascendancy in this very match. Somebody writes Irshad Khan, to be honest, and
unfortunately can't read out his command for all of the viewers. Thank you, Sohail Ramzan, Miraj Bhatt and Ashu Khan, followed by Gawar bin Khurshid. And this has really been a wonderful match out here at the centre. Join this way and you will get your money's worth. Believe me, Turukzad Khan writes in something. And in the meantime, Adil Zuhur will be bowling. But Ashik Maqbool and Asrar Ahmed is also dropping his comment. Thank you all the beloved viewers. This broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, Anthem Sports India. That wasn't a toss-up, but the pitch offered that sort of a toss-up delivery. After pitching the ball, raise it almost up the waist height outside the off-stump into the safe hands of the wicket-keeper. And Mudassir Alam writes in, Nasubid. Thank you. Mohammad Shafi writes in. And thank you for your love, Mohammad Shafi and Ghazi Maraj. That's a good shot. And a fielder bounces onto the ball. What could have been a boundary? Restricts and limits the scoring down to a single. And somebody, Ahmad Nadeem, Maisal Munawar speaks. And Gawar Aman and Malik, Saeed Asrar, Indrabi and others. This broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, followed by Anthem Supports India, Fashion Feast, the Shining Star Pumper. Oh, this time improvises. And this is another beauty of T20 cricket. And look at that one. That has gone behind the wicket-keeper. And Harun Khan does well. Does mop up in time. Both the batters scamper through for brace, taking the score to next level without any harm done. They are in excess of 70 for the loss of no wicket. जी बिल्कुल, लगातार इस समय स्कोरबोर्ड को गतिशील रखते हुए दोनों बल्लेबाज अच्छी शुरुआत, ठोस विश्वसनीय शुरुआत इस प्रारंभिक जोड़ी द्वारा। इस बार जगह मिली, खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात नहीं और गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। That's gone to the no man's area. That's called the straight hit. You can't keep fielder there, the backing of the ball. But that has really been a wonderful shot. Nice pick-up shot down the ground, slant bat. And look at that, that's a kind of a tennis shot. But that has been sent all the way down to the boundary. Irfan Hussain writes in, Ihan Khan and Dream Boy Shocker. Thank you all the beloved viewers. But look at that wonderful shot from Irfan lefty. Score moves to next level. Next one coming up. And this time dabbing that one in front of point. One behind Iran. That's a dot delivery. And every dot ball is worth and weight in a gold here at the moment. And you have to chip in with dot deliveries. जी बिल्कुल, और यहाँ पे कोशिश करनी होगी। 79 हो गया है कुल योग इस समय। हालांकि प्रारंभिक जोड़ी समय बीच मैदान में और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन ओवर पूरा हुआ। सबके 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 80 रन है कुल योग और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों द्वारा। आदिल बॉर्डर और इरफान, ये मान्यता प्राप्त जोड़ी समय बीच मैदान में बनी हुई। और मुजम्मिल वानी हमारे साथ बने हुए। तो फिर तुर्क जाहिद खान के साथ अहमद नदीम, बहुत बहुत स्वागत और आभारी जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। Nadeem, we are really indebted to you, Allah. It's you, Allah. It's you, a sport which we need badly at every instant of the life. While delivering the live broadcast time and again, it's Siwal Ahmed Nadeem. Thank you for your love. Sheikh Dilshad and Raja Rasool. Down Nazir. It's 88 for the loss of no wicket. Well, 8 overs done with 12 hours to go. जी बिल्कुल, अभी भी 2 days back we covered a match way back in North Kashmir's Tangmog area. The two openers at that very crucial juncture, they were also going all guns blazing. But with the passage of time, when it comes to the next passage of play, the next 10 or 12 overs, things can change. And we have found on that very day how things can change. The pendulum can really shift both ways, and I can use a word ferociously, boisterously, and another word is wildly. जी बिल्कुल, और 8 ओवर पूरे हो चुके हैं। 80 रन अब तक करीब करीब बना लिए हैं और कहना चाहिए कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। हालांकि इस समय ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान में चलता हुआ। मुजफ्फर वानी, बेस्ट कमेंट्री, धन्यवाद मुजफ्फर भाई आपका। और साहब कश्मीरी के साथ बट इमोलिक हमारे साथ जुड़ते हुए। Thank you, Saab Kashmiri. Belatedly join us, and but Imolik is also watching. All the beloved viewers, the two teams are locking on. Broad Enterprises taking on Bastion Cricket Academy. Semifinal number 2 coming your way. Ahmed Khan, Amjad Khan it is, and Mudassir Alam, Zakir Ahmed, and Jim Rathar and Irfan Hussain. These are the beloved viewers on JK Sports Time. Then followed by Sal Bashir and Dream Boy Shocker. Done, it's 88 for none. You can understand, with 10 wickets in hand, 12 overs remaining at your disposal, you are Anna Bowles, and you are Anna Bowles to prove your mettle, and you can really go off to the bowlers, and you can. Amir Bhatt writes in, commentators Nazir Ahmed alongside me, myself Munawar speaks alongside me, Nazir Ahmed. And this broadcast is brought to you by Anthem Sports India, Arc of Fenestration, Fashion Feast, the Shining Star Pampur, and MHM Multi-Fashion Brand.
जी बिल्कुल। और लगातार इस सीधे प्रसारण को जो हमारे साथ ये बने हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है। और उन स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे जो हमें इसमें पूरा सहयोग देते हुए। और अगर हम बात करें एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, फैशन फिस्ता, आर्को फेनेस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी, सभी हमारे इन स्पॉन्सर का बहुत बहुत आभारी हैं। पूरी अगर बात करें टीम जेके स्पोर्ट्स टाइम की, to sort out the two teams who are locking on in this very semi-final. We got Bastion Cricket Academy that belongs to Gaunderbal district, then followed by the other team which is Bird Enterprises. These two are the teams. These are the second semi-finals. Some are semi-finalists. We have one semi-finalist that has made its way to the finale. That is Ali John. They are seated both at the finale, at the grand finale of this very league. They're in the finale, and these two teams, the team which will win today, will join Ali John for the Sunday. Hugely packed the market coming your way on Sunday, but today match it is a big semi-final coming your way. The big teams are locking on. You can see the teams. You can see Bastion Cricket Academy has got big names, followed by their opponent side, that is Bird Enterprises. Abdul Hanzala writes in. Abu Hanzala, please, Nazir Saab. Thank you, Abu Hanzala. Don't worry, he will carry on with his commentary. It's 88 for the loss of 8. And in the meantime, we definitely love to include the names of the sponsors: Arco Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, followed by Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pumper, and MHM Multi-Fashion brand. And I would definitely love to see people coming this way and watching this wonderful match, which is coming your way. What a match we have witnessed so far. 8 overs, 88 for none. And you can see there are the big names in both the teams. Adil Border is playing. Irfan Lefty is on strike. Adil Border is at the non-striker's end. He just few runs away from his individual half century. And you got Ishtiyaq Eli Robbie is playing in Bird Enterprise, in their very side, in that very side, so-called, namely it is Bastion Cricket Academy. जी बिल्कुल। और ये 9वां ओवर इसमें पारी का चलता हुआ और अब तक 88 रन बने हैं बगैर नुकसान के। और इस बार क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, पीछे है खिलाड़ी और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। बेहतरीन और दर्शनीय स्ट्रोक और 4 रन और खाते में जुड़ते हैं। 92 हो गया है कुल योग 9वें ओवर में बगैर नुकसान के। बेहतरीन तेज तरार शुरुआत दोनों बल्लेबाजों द्वारा, चाहे आदिल बॉर्डर की बात की जाए या फिर इरफान की बात की जाए। बेहतरीन और विश्वसनीय पारी इस समय बीच मैदान में चलती हुई और ये बहुत ही बड़ा मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल, और जहां से विजयी टीम जो है वो फाइनल में भिड़ेगी रविवार के दिन। कहना चाहिए बहुत ही आकर्षक मुकाबला होगा वो, जो फाइनल शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत इस खूबसूरत ऐतिहासिक शालबुग गांधरबल के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में। इस बीच इस गेंद को खेला, हालांकि पीछे खिलाड़ी काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी। जब तक उसको फील्ड किया जाता तब तक 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ है 93। 9 ओवर प्रगति पर 93 रन बना लिए हैं और इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या बेहतरीन और विश्वसनीय प्रदर्शन अब तक का देखने को मिला है। यासर बशीर, जीएम राथर, मोहम्मद रफी, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम की पूरी कमेंट्री टीम द्वारा। और ज्यादा से ज्यादा इस सीधे प्रसारण को शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुड़कर इस महा मुकाबले का आनंद ले सके। हॉटेड आसिफ भी हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत आभारी। और इस समय स्थिति यह है कि पारी का 9वां ओवर, पहली पारी चलती हुई और 9वें ओवर में अब तक 93 रन बना लिए हैं बगैर नुकसान के बर्ड एंटरप्राइज की टीम ने। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, हालांकि बल्ला जरूर चलाया था और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। साइको डार हमारे साथ जुड़ते हुए मीर तारक के साथ हॉटेड आसिफ, बहुत बहुत स्वागत सभी व्यूअर्स का। और आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर लपेट कर मारा, वहां पर जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम। हालांकि प्रयास जरूर किया लेकिन असफल। We definitely love to include a very vital update coming our way. It is Bird Enterprises got these names in their side. Jangir Bhatt, thank you for your love. And we got Gawar Rashid, Irfan Lara, Adil Border, Imtiaz Lefty, Zaidar, Akib Bika, Harun Tajamal, and Umar Gudu. And Haris Sangin, Ishfaq Shah. These are the guys in their playing 11. And all the blood viewers, listen in once again and do remember the names which I will include. Adil Border improvises on the occasion. Another thing that has evolved ever since the beginning of cricket at the international arena. Look at that. How cricket has evolved. Look at this man shuffling across. Comes outside the off stump and tries to open up the onside. And look at that shot, a kind of a paddle sweep, or we can also use another word that is a kind of a dilly scoop down towards the onside. Gets another single. And let me include once again the playing 11 and the names of their side.
Gawar Rashid followed by Irfan Lara, Adil Border, Imtiaz Lefty, Zaidar, Akibika, Harun Tajamul, Umar Gudu, Haris Sangin and Ishfaq Shah. These are the guys in the lineup. जी बिल्कुल 9 ओवर पूरे हो चुके हैं और कहना चाहिए बेहतरीन प्रदर्शन। हालांकि जूझ रही है इस समय टीम बास्टन क्रिकेट एकेडमी के गेंदबाज, एक सफलता अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है। और यहां पर अगर हम शालबुग सुपर लीग की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, इसके सदस्य हैं शालबुग क्रिकेट बोर्ड के, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने जिस प्रकार से अपना सहयोग दिया। और मेंबर्स की बात करें तो शेख फैजान, मंजूर, उर्फीद अहमद, खालिद शेख, इरफान कयूम, समीर अहमद, लोन यासिर, ये जो लोग हैं बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है इस मैनेजिंग बॉडी में। और अगर स्पॉन्सर्स की बात की जाए, Well, coming back to the Shalbugh Super League, Nazir, nowadays cricket and the commentary has also evolved. There was a time when you were bound to throw out the names of the sponsors, but nowadays you can really include the names. Well, go through the sponsors for Urban Ike, Raj King and New Manzoor, Provisional Store, Kangan, and after that coming back to this tournament is being organized by Shalbugh Cricket Board. Members Yasir Wani and Samir Ahmed Lon, Sheikh Farhan Qayyum and Urfid Ahmed Khande and Sheikh Faizan Manzoor. These are the guys who are putting their 100% in, and these are the guys who have done a very good job in a day and day out to host to this wonderful league. And now we are at the verge of getting into the grand finale, which will be brought to you through Sam Channel and through Sam Sports Portal on Sunday. This Sunday, do join us for the Sunday Packet Dhamaka coming your way. जी बिल्कुल एक बहुत बड़ा क्रिकेट का महायुद्ध होगा और देखना ना भूलिएगा। सीधा प्रसारण आपको जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस बार इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी है, वहां पर मौका हो सकता है। अगर थ्रो सटीक स्टंप्स पे लगता तो खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन ऐसी कोई क्षति नहीं। रनों की गति में एक और वृद्धि और लगातार इस समय धीरे धीरे से एक प्रेशर की स्थिति, गेंदबाजों पर दबाव की स्थिति और उससे निकलने की कोशिश, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं गेंदबाज। हालांकि 10वां ओवर में प्रगति पर है और प्रारंभिक जोड़ी आधी पारी समाप्त होने को है। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई आदिल भाटेर और उनके साथ इरफान लेफ्टी, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है इस पहली पारी में। सेमीफाइनल मुकाबला, निर्णायक कांटे की टक्कर का यह मुकाबला बास्टन क्रिकेट एकेडमी और बोर्ड इंटरप्राइजेज के विरुद्ध इस समय इस खूबसूरत ऐतिहासिक शालबुग के क्रिकेट स्टेडियम में चलता हुआ। Short pause in the game. We'll have to wait and watch who's gonna switch over the wicket from that very end. To us, it is forehand. Sajjad will be bowling. For the first time he has been brought on because all the bowlers, they were under the serious hammer. They have been taken to the cleaners, and the strokes which were played, they are taken a kind of a leaf out of the opponent's book, to be precise, Nazir. जी बिल्कुल। और यहां से किस प्रकार से किस रणनीति के साथ वो गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 10वां ओवर इस समय प्रगति पर है और 99 रन बने हैं बगैर नुकसान के। 9 ओवर की समाप्ति, 99 रन, 10वां ओवर प्रगति पर। आधी पारी समय संपन्न होने को इस बार अच्छी गेंद आवश्यकता के गलियारे में फेंकी हुई, हालांकि खेला ऐसे तैसे करके 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ स्कोर 13 अंकों में पहुंचता हुआ शतक पूरा हो गया है पूरी टीम का। 100 बगैर नुकसान के 10वां ओवर में पारी का चलता हुआ आकर्षक मुकाबला और बेहतरीन जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए कुदरत का बनाया हुआ यह करिश्मा, खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान शालबुग गांधरबल का और अपने आप में एक नया इतिहास लिए हुए और क्रिकेट का यह मुकाबला इस मैदान में, और यह मैदान इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ इस ओवर में। अगली बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, लेकिन उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 104 और डगआउट से तभी जितने भी उनके समर्थक खिलाड़ी हैं उन्होंने दाद दी स्ट्रोक की बेहतरीन प्रदर्शन इस समय इरफान और आदिल बॉर्डर द्वारा। 104 रन बगैर नुकसान के यह अब तक का लेखा जोखा पारी का 10वां ओवर में प्रगति पर है और अभी तक कोई सफलता नहीं हाथ लगी है। अगर बात करें बास्टन क्रिकेट एकेडमी के गेंदबाजों की, जूझ रहे हैं, हालांकि प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है पूरी तरह से कहना चाहिए इस समय गेंदबाजी पे बल्लेबाजी हावी। इस बार फिर लेग साइड में मोड़ा उसको, हालांकि 1 रन पूरा कर रहे हैं। काफी
पीछे से आना पड़ा वहां पर खिलाड़ी को, जब तक उसको फील्ड किया जाता। 1 रन और चहलकदमी करते और कुल योग पहुंचा इसमें बोर्ड इंटरप्राइजेज का 105 बगैर नुकसान के। अभी आधी पारी समाप्त होने को है, यानी कि 10वां ओवर प्रगति पर 105 रन। और उमर इलाही हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और आप अपना प्यार और विचार हमारे साथ डिजिटल स्टार्स के जरिए भी आप प्यार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि खेला जरूर, फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश असफल वहां पर, और जहां पर रन नहीं होना चाहिए थे वहां पर 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन 10वें ओवर में बगैर नुकसान के। Well, Irfan lefty, Adil Border, Irfan Lala, Imtiaz lefty, Zaidar, Akibika, Harun Tajamal, Umagudu, and they got Haris Sangin and followed by Ishfaq Sheh. And these are the guys playing in their side, namely Bird Enterprises. Locking on is with Bastion Cricket Academy. Look at the Bastion Cricket Academy. They got big guys, they got big guns in their lineup. The best on the receiving end today. This afternoon, belatedly, a kind of a late start to this all-important semi-final number 2. But look at runs coming everywhere. It's raining 4s and 6s here at the center. Thanks to Adil Border, followed by Irfan lefty. These are the two openers who have set things ablaze and announced themselves earlier on this afternoon here at the center. जी बिल्कुल, 105 रन बना लिए हैं। क्या कहना, आधी पारी समाप्त हो चुकी है, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। और जहां से कहना चाहिए कि बड़े स्कोर की ओर अग्रसर दोनों बल्लेबाज, और अगर टीम बर्ड्स एंटरप्राइजेज की बात करें तो कहना चाहिए कि बेहतरीन और विश्वसनीय प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों का, और एक बड़ा लक्ष्य होगा जिस प्रकार से इसमें बल्लेबाजी चल रही है। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है मैं समझता हूं 200 के ऊपर ही स्कोर बोर्ड जा लगेगा। बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन दूसरी ओर एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, फील्ड अनुशासित गेंदबाजी, और कहना चाहिए कि एक सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी है यदि बल्लेबाज पे कुछ प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो। सोफी फैसल बाटे मोलक के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए, और इस बार फिर जगह मिली, उठा दिया उसको और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अब लगातार इसमें रनों की बरसात होते हुए आदिल बॉर्डर द्वारा, और इसके साथ ही संभवतः उनका अर्धशतक पूरा। जी हां, बेहतरीन अर्धशतक ये पूरी पारी खेली उन्होंने ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी इस बड़े महानिर्णायक मुकाबले में। And Adil gets to his 15 style. He goes to 51. He's unbeaten on 51. What an innings! An enterprising and stylish, calm copybook. And he's got cool head on his shoulders. In the meantime, that should have been put away. Once again, it was in that arc and radar to be put away. Nazir don't get success onto that one, and he wanted to lift that one up down towards the extra cover area. A dot delivery coming handy for the bowler there. तापमान बहुत ज्यादा और ऐसे में बल्लेबाजी करना भी आसान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो आज पारी का प्रारंभ करने आए हैं और 51 रन पे नाबाद है, और बेहतरीन प्रदर्शन अब तक उन्होंने किया है, अर्धशतक ये पारी है, और ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी। नए ओवर की शुरुआत हो चली है और दाएं हाथ से ये गेंद इस बार फिर पूरी तरह से शफल करते हुए, हालांकि खेला 1 रन पूरा कर रहे हैं जब तक उसको फील्ड किया जाता। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 107। लगातार कहना चाहिए कि बेहतरीन और विश्वसनीय प्रदर्शन देखने को मिल रहा है आदिल और इरफान द्वारा। बेहतरीन प्रदर्शन, और जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने बल्लेबाजी की है, कहना चाहिए कि जिस शैली के बल्लेबाज है उस शैली के अनुरूप इस समय बल्लेबाजी होती हुई दूसरे सेमीफाइनल निर्णायक मुकाबले में। Well, a big match worthy of the semi-final. You can see the two teams. It comes down to these two teams to seek berth at the grand finale. We have already one team. They have really studied their ship and they are really still at that very momentum, and they are in the finale. Oh, there goes wicket number 1. The first blood is drawn. The lefty has to walk back. It is Irfan lefty is walking back, completely distraught. Not happy with his shot selection. Poor shot selection. And there goes wicket number 1. The first blood is drawn at the score of जी हाँ, यहाँ पर and 7 for the loss of 1. Nazir, there comes wicket number 1st, and look at the guys. They're not even celebrating because they know the fact that the initiative has been seized to larger extent by the batting side. जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई, बेहतरीन प्रदर्शन रहा शुरुआती ओवर में। हालांकि अब जाके इरफान लेफ्टी का विकेट मिला है। इस बार अगर बात करें बल्लेबाज की, पसीने से तरबतर है यहाँ पर आदिल बॉर्डर, और क्यों ना इस कहना चाहिए कि कड़कती धूप में तापमान करीब 33-34 डिग्री का, और ऐसे में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है। बेहतरीन प्रदर्शन, पहली सफलता मिलती है वहां पर बास्टन क्रिकेट अकेडमी को। इम्तियाज लेफ्टी
नए बल्लेबाज पहुंचे हैं और इरफान लेफ्टी का स्थान लेने के लिए, तो देखना है किस प्रकार से वे बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि उनके सामने अगर हम परिस्थितियां देखें तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार है। 107 रन बने हैं 11वें ओवर में और मात्र एक सफलता हाथ लगी है बास्टन क्रिकेट एकेडमी को। कहना चाहिए एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर इस समय दोनों टीमें की अगर तुलनात्मक तौर पर बात करें, हालांकि बर्ड इन प्राइजेस की टीम एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर, लेकिन दूसरी ओर अगर बास्टन क्रिकेट एकेडमी की बात करें तो यहां से जिस प्रकार से उन्हें एक सफलता मिली है और एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति बनानी होगी बल्लेबाजों पर, क्या उसमें वो सफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आकर्षक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। Well, everyone should remember these names. Shalbugh Cricket Board, followed by the members Sheikh Faizan Manzoor, Urfid Ahmed Khande, Sheikh Irfan Qayyum, Samir Ahmed Lon and Yasir Wani. These are the guys who have been working hard. It's a kind of a hard nut to crack, to be precise, to host a tournament, to organize a tournament in such a wonderful manner, and then followed by, and they have been really phenomenal throughout the season, working hard in a day and day out, 24/7 to be precise. They have to work on the turf, they have to maintain the turf and other things, and there comes Raja Rashid, another wonderful person, one of my beloved cricketers. I have been with him outside the state last time round, and this time round we would definitely love to go once again, but during this very break we can also include the names of the two teams. Bastion Cricket Academy, Harun Khan is the captain of the side, followed by Junaid Qazi, Salim Dar and Zaid bin Nazir, Farhad Sajjad Ahmed and Rabi Akimir Adi and Faizan, followed by Adil Zahoor. Then we go through the Adil border side. The good Irfan lefty, Adil border, Irfan Lala, Imtiaz lefty, who just walked in after the fall of the wicket number 1. Then followed by Zaidar, Akib Kaka, Akib Bika to be precise, Harun Tajammul, Umagudu and Haris Sangin and Ishfaq Shah is also playing in their lineup. Well, going through this very match, this is the second semi-final of the summer coming your way, and look at the two teams evenly poised for this wonderful match. And let's take a name of the two umpires who are hosting this very wonderful match, who are officiating to be precise. We got Sheikh Faizan, followed by Ibu Atif. These are the two umpires who are standing in this very match. Well, Nazir, there were so many beloved viewers who want to know the names of the two commentators. Munawar speaks, to be precise. You can find the name on Facebook, and then you can also call me Munawar Tanveer. Then we got Nazir Ahmed in the comment box. And this broadcast is brought to you by Arco Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, followed by Anthem Sports, India Fashion Fiesta, Shining Star Pampur and MHM multi-fashion brand. And this wonderful coverage is coming to you through JK Sports Time from Shalbugh Sports Field. And this is a wonderful, look at the vicinity. It is beautiful. Look at the mesmerizing and the scenic view of the center. And the two teams got a lot of stars who are locking horns. And we would definitely love to thank all our beloved viewers who sent us the stars from different parts of the valley and from different walks of the life, to be precise. जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। और नए बल्लेबाज इस समय पहुंचे हैं इरफान इम्तियाज लेफ्टी, और किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे। नवाब रिजवी हमारे साथ बने हुए हैं, शाह, इनके साथ बहुत बहुत आभारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये सीधा प्रसारण शालबुग के ऐतिहासिक खूबसूरत मैदान से आप तक पहुंचता हुआ। पारी का 11वां ओवर प्रगति पर और एक सफलता लेने के बाद नई ऊर्जा और उत्साह के साथ इसमें गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज, और किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे ये गेंद। और इस बार हालांकि गति में थोड़ा सा परिवर्तन, उनके पास रफ्तार उतनी नहीं है, बेहतरीन प्रयोग करते हुए सीधे विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये अच्छा कहा जा सकता है बास्टन क्रिकेट एकेडमी के दृष्टिकोण से। Well, once again they have to rotate their fielders. Captain has to settle himself out in the middle when there is left and right and combination at the crease. It's quite difficult. It's another hard nut to crack. Nazir, believe me, this isn't an easy thing, and you have to be circumspect and you have to be 100% in with the game. जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हालांकि इस समय आदिल बॉर्डर है सामने, अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद अभी भी नाबाद हैं और काफी लंबे समय से वो क्रीज पर बने हुए हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने आज संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की है, ये बेहतरीन प्रदर्शन है। हारून खान गेंदबाज हैं और देखना है जो कि अपनी टीम के कप्तान भी हैं। अगर बास्टन क्रिकेट एकेडमी की बात करें तो काफी कुछ निर्भर करेगा इस गेंदबाज पे, किस प्रकार से वो गेंदबाजी करेंगे। और सामने है आदिल बॉर्डर जो कि एक आकर्षक पारी, और उनकी निगाहें जम चुकी हैं, काफी लंबे समय से वो विकेट पर बने हुए हैं। बेहतरीन प्रदर्शन और एक संघर्षपूर्ण मुकाबला इस गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष चलता हुआ। इस बीच पहली गेंद उसको खेला जरूर, वहां पर खिलानी है तैनात जब तक उसको फीड किया जाता। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ नसीर लोन के साथ मांग रहे आशिक और मंजूर खान लगातार हमारे साथ बने
हुए बहुत बहुत स्वागत सभी जेके स्पोर्ट्स टाइम की दुनिया के व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। और हमारे पास शब्द नहीं है कि उनका हम अभिनंदन करें, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार हमारे साथ बने हुए अपना प्यार और विचार देने के लिए बहुत बहुत आभारी। फिलहाल 108 रन हो चुका है कुल योग। अगर बात करें कुल योग की, बर्ड्स इंटरप्राइजेज की टीम इस समय बॉस्टन क्रिकेट एकेडमी के विरुद्ध इस दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ंत होती हुई शालबुग के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में, शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत। और सफल आयोजन इस प्रतियोगिता का जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जितने भी सदस्य हैं, उनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे कि एक खूबसूरत और बेहतरीन सफल आयोजन किया इस प्रतियोगिता का, जिसके चलते आज अंतिम चरण में है, यानी कि दूसरा सेमीफाइनल बीच मैदान में। जी बिल्कुल। और शाहिद तांत्रे, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और नजीर भाई नाइस, मोहम्मद आकिब के साथ हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आप। और जितने भी आप प्रशंसा के लायक होंगे उतनी प्रशंसा कर दी होगी। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, जिसे कि क्रिकेट की भाषा में कहते हैं लपेट कर मारा और गेंद निकल गई दूर उस ओर, दर्शक बीरगांव से बाहर 6 रनों के लिए। That's a towering below. That's going all the way and gone all the way for 6 more. And we definitely love to thank all the blood viewers on JK Sports Time this afternoon for sending in the stars. It's your love which puts kind of people to a tank, and we love to continue time and again. And it's incomplete without your sport. You guys, you're the guys, you're phenomenal ones, and you're the family of JK Sports Time. Said Zaid and others, thank you. 121 on the board. That's a good shot all along the ground, down towards the long off. Just a single, and Adil Border continues to groom up a bit. And he has really enhanced himself with the new techniques, new tactics, and all of the belows, Adil Ahmed and others who have sent us the stars. Keep sending in the stars. We're eagerly waiting for your love. जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से आदिल बॉर्डर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी कहना चाहिए कि संयम आत्मविश्वास के साथ वो इस समय बल्लेबाजी करते हुए, और उनकी निगाहें जम चुकी हैं। आज पारी का प्रारंभ करने आए थे वे इरफान के साथ, हालांकि इरफान लेफ्ट ही पवेलियन जा चुके हैं। और जिस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाजी धीरे धीरे एक और साझेदारी पनपती हुई, और कहीं ना कहना चाहिए कि अगर हम आत्मविश्वास की बात करें क्षेत्र रक्षण टीम की, यानी कि बॉस्टन क्रिकेट एकेडमी की, तो कहीं ना कहीं उनके कंधे गिरे हुए। इस बार लेग स्टंप पर और गेंद को निकाला पीछे सीमा रेखा से बाहर। That is another effect of the pressure, and that's what pressure does to you. 5 gifted wides, and score moves to 127. Nazir, it's running boundaries and 6, and look at the bowler. He has committed another mistake and ball down the leg side, way down the leg, and spraying down the leg. 5 runs, 5 gifted runs, 5 wides to be precise. Next one coming up, lefty on strike. Imtiaz lefty waits for the bowler. Bowler comes in. That's a good ball. Loud batter line coming into the batsman in an arc and play it out towards the long on. Will get a single, and that's all he will get. 1-8 for the loss of 1. We are in over number 12 up to match. Thank you, Khan Manzoor, other lefty and others for backing us and for sending in your love and your precious and invaluable and priceless comments. Thank you for your love. This broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, followed by Anthem Sports in the Fashion Fiesta. And rest after that one. Oh, he has been cleaned up. What a delivery. Bamboozle, clean bowled. And there goes wicket number 2. And that too, the set man, the man who got his eyes in, has thrown his wicket away. But that is a wonderful delivery. That was a peach. And bell is down. The opal goes flying. And that means Adil Border has to walk back. Second blood is drawn. And Border goes. And best of luck from our side. You bet he has done your job. No doubt about that, but he has been removed at this crucial juncture when the opener side needed his wicket badly. And there goes Adil Border and receives that round of applause plus standing ovation for this man, and that's it. Adil Border done and dusted. New man is gonna whack in, will replace Adil Border here at the center. जी बिल्कुल। और आदिल बॉर्डर अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद वापस पवेलियन लौटे, वहां पर साफ बोल्ड किए गए गेंदबाज द्वारा। तो दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ बर्ड्स इंटरप्राइजेज की टीम को। बॉस्टन क्रिकेट एकेडमी की अगर हम बात करें तो उन्हें ये दूसरी सफलता मिली है। आकिब बिकार नए बल्लेबाज पहुंचे कर इस पर, और देखना है किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे। आखिरी जो ये 5-6 ओवर बचे हैं, तो कहना चाहिए कि 180-190 का लक्ष्य अवश्य होगा। जिस प्रकार से एक ठोस, विश्वसनीय और मजबूत आधारशिला बीच मैदान में बनी हुई दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा, खासकर आदिल बॉर्डर और इरफान लेफ्टी, और उसके बाद इस समय बीच मैदान, हालांकि दोनों नए बल्लेबाज हैं, लेकिन उनके
उनके सामने जो अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, आधारशिला की बात करें, वो काफी मजबूत। इस बीच उमर लतीफ के साथ मंगराल तुफैल हमारे साथ अयान अशरफ के साथ बने हुए। बहुत बहुत स्वागत। जेके स्पोर्ट्स टाइम की पूरी कमेंट्री टीम द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है। बने रहिए, अपना प्यार और विचार डिजिटल स्टार्स के जरिए भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। Well, exactly. Your sport is quite important for all of us here in the com box, even for the entire valley of JK Sports Time. Ayan Imtiaz and Anis Karbalai, and followed by Fida Sajjad. These are the beloved viewers. And Mir Mohammed. It is Mir Akif. Thank you for your love and for your sport. In the meantime, the man who has provided the much-needed breakthrough in the form of Adil Baur is going to bowl to Akif Bika. And Bika on the very first ball. Look at this man. Look at this man. Have you observed him keenly? Look at this man. He just came in. He just walked in, and look at that whiff of the back foot. That worked away. That supper is coming into play down towards the mid-on. No run, no doubt about that. But that shot looked very wonderful to me. Treat to watch that shot. And somebody writes in score 1-2-6 for the loss of 2. Very never number 13 of the match. जी बिल्कुल 126 रन है इस समय कुल योग। 2 खिलाड़ी इस समय पवेलियन जा चुके हैं। आदिल बॉर्डर जिन्होंने के 60 रनों की पारी खेली और वो इस समय डगआउट में बैठे हुए हैं, आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। लेकिन 60 रनों की पारी और ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी, शुरुआत बहुत ही बेहतरीन, मजबूत और विश्वसनीय दी अपनी टीम बोर्ड इंटरप्राइजेस को। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। Well, thank you our entire team of JK Sports Time, and somebody writes in, and you will be updated in the second innings with the scorecard in the below scroll. The score will be brought to you. Don't worry. Don't get upset, dear buddies, and we will go through the playing 11 of both the teams. Irfan lefty, Adil Border, Irfan Lala Imtiaz lefty, Zaidar, Akibika, Harun, Tajamal, Omar Gudu, Haris Sangin, and Ishfaq Sheh. जी बिल्कुल। और यहाँ पर इस अगली गेंद को खेलकर एक रन पूरा कर लिया। 1 रन के साथ ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और स्कोर बढ़ता हुआ 127 संभवतः 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है बोर्ड इंटरप्राइजेज की टीम इस निर्णायक दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। और यहाँ से विजयी टीम एतवार के दिन फाइनल में भिड़ेगी अलीजान क्रिकेट क्लब के साथ। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। हारून खान है गेंदबाज, और कहना चाहिए कि सफल गेंदबाज है अभी तक, जो कि शायद टीम के कप्तान भी हैं बास्टन क्रिकेट एकेडमी के। बहुत ही लाजवाब और विश्वसनीय प्रदर्शन उनका अब तक गेंदबाजी का। 127 2 विकेट के नुकसान पर हारून खान इस ओवर में अगली बार। उनकी ये गेंद अच्छी गेंद, हालांकि ऑफ मिडल पे पड़ने के बाद खेला, उसको हल्के से प्लेस किया। जब तक उसको फील्ड किया जाता है, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, और जब तक थ्रो आता विकेट कीपर के पास तब तक दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और कुल योग में 129 129 2 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा अब तक का इस दूसरे सेमीफाइनल की परिस्थितियां यही है कि इस समय पहली पारी चलती, निर्धारित 20 ओवर का कोटा, और शालबुग सुपर कप वर्ष 2022 के अंतर्गत इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में, जो कि शालबुग का ऐतिहासिक मैदान, इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ फिदा सज्जाद हमारे साथ बने हुए डार अर्शिद के साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। हारून इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद, हालांकि बल्ला जरूर चलाया लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, और शेष कार्य पूरा किया विकेट कीपर ने, और यहां पर रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 129 जेके स्पोर्ट्स टाइम। खान राजा अपना प्यार और विचार देने के लिए बहुत बहुत स्वागत। बने रहिए हमारे साथ अपना प्यार और विचार देने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। इस बार ऑफ स्टंप पर जगह मिली, खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात, जब तक उसको फील्ड किया जाता। 1 रन और मोहम्मद अशरफ भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत अशरफ भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जीएम रातर भी लगातार हमारे साथ बने हुए, और जितने भी प्रशंसा इन सभी व्यूअर्स की जाए उतने कम। खान राजा अपना प्यार और विचार देते हुए बहुत बहुत स्वागत, आभारी, और आपके प्यार और विचार के चलते इस समय ये सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि उतना ही सम्मानजनक स्ट्रोक, बैट और पैड मिलाकर बगैर किसी रन के स्कोर अभी भी 131 2 विकेट के नुकसान पर। लगातार हमारे व्यूअर्स आदिल लेफ्टी और बाकी अन्य लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम जेके स्पोर्ट्स टाइम की पूरी टीम, जिस प्रकार से अपना प्यार और विचार देते। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली। गेंद हालांकि उनके शरीर पर लगने के बाद वही पास में लुढ़की, बगैर किसी रन के ओवर हुआ पूरा। 111 2 विकेट के नुकसान पर बोर्ड इंटरप्राइजेज की टीम इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में बास्टन क्रिकेट एकेडमी के विरुद्ध। आकर्षक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेती हुई। फिदा सज्जाद खांडे अय्याश के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए, और जेके स्पोर्ट्स लाइव ताहिर गनई के साथ हमारे साथ बने हुए हैं।
130 रन 2 विकेट के नुकसान पे। Well, 130 for the loss of 2 wickets. The 2 batters out in the middle is Irfan lefty, alongside him Imtiaz. It is Imtiaz lefty and Zaid. It is Akibika who just whacked in after the falling of Adil Border, and that one down the leg side. We'll have to wait and watch. Thank you, Sajjad Butt, Imtiaz Butt and others. And this time I'm passing, well, it's a leg by edition in total nonetheless. Score moves to 132. Wani Jangir wants to know the location. This is Shalbugh Sports Wheel here in Gandharbal. And Mubarak Ahmed, thank you. Imran Nazir, all the beloved viewers. And once again I would definitely love to throw it out. Walaikum salam to all the beloved viewers. 132. We are in over number 13 of the match. 134 on the board. This broadcast is brought to you by Arco Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, and Ghulam Hassan is watching, and Mir Hassan, and followed by Gulzar Ahmed, and Advocate Hilal is also watching. That's a good delivery. That kicking off the surface, jumping off the surface, beaten all ends up, and wicketkeeper does the rest. And but the ball popping out of his hands and ricocheting down towards the short fine, and no possibility, just a single there, another run added to the tally. 135 for the loss of 2. 135 2 विकेट के नुकसान पर ये है स्कोर इस समय 14वें ओवर में। इस बार ये गेंद और हल्के से उसको खेला जरूर पीछे खिलाड़ी, ये देखते हुए कि वहां पर खिलाड़ी थोड़ा पीछे है, जब तक उसको फील्ड किया जाता, मिस फील्ड का नतीजा, जहां पर एक ही रन होना चाहिए था वहां पे दूसरा रन भी मिलता हुआ, और इस दूसरे रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 137 14वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर बर्ड्स एंटरप्राइजेस की टीम का स्कोर। और बास्टन क्रिकेट एकेडमी जो कि इस समय गेंदबाजी करती हुई, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, पीछे है खिलाड़ी, जब तक उसको फील्ड जाता, एक रन और चहलकदमी करते, और लगातार कहना चाहिए कि स्कोरबोर्ड को गतिशील रखते हुए दोनों बल्लेबाज, अच्छी रणनीति, अच्छी योजना। 138 सैयद तहा बुखारी, लॉस हीवन के साथ मुन्ना शेख और आदिल मीर लगातार इस सीधे प्रसारण में हमारे साथ बने हुए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये सीधा प्रसारण इस खूबसूरत और ऐतिहासिक मैदान से आप तक पहुंचता हुआ। शालबुग का ऐतिहासिक मैदान, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन हालांकि स्ट्रोक जरूर खिला, ताकत नहीं दे पाए पीछे खिलाड़ी, जब तक उसको फीड किया जाता, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, खतरा हो सकता है, लेकिन उस चोट पे जिस और खिलाड़ी दौड़ रहे थे वहां पे गलत थ्रो कहना चाहिए, और दूसरा रन भी पूरा होता हुआ 140 संभवतः 2 विकेट के नुकसान पे। Nazir, we would definitely love to talk about this one. Lapse of concentration, got overcautious. And the man out in the middle, he has to be 100% in with the chance of the game, and he has to stay patient, and he has to make sure that he is in the game. And look at that very lapse of concentration. That's a good shot, and no need to run for that, and no need to run for those 4 of those to be precise. 144. That's a wonderful shot. A little tad puller outside the off stump, and little tad shot to be precise, width on offer, and it was asking to be hit. So does the batsman stand tall, and look at that negligible feet movement, but look at that slap of the back foot, in Hindi you call it थप्पड़ रसीद करना, isn't like? जी बिल्कुल, और यहाँ पे कहना चाहिए कि जैसे ही जगह मिली और उसको निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और आदिल बॉर्डर हमारे एक व्यूवर का कहना था कि उसने कितने रन में 60 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे, बेहतरीन आकर्षक पारी उन्होंने खेली। Well, John Farooq and others want to know the score, and time and again we are throwing out the playing 11 of both the teams. Will start once again by Bird Enterprises. Irfan lefty, Adil Border, Irfan Lala, Imtiaz lefty, followed by Zaidar, Akibika, Harun Tajamul, Umagudu, Haris Singhin, and Ishfaq Shah is playing in Bird Enterprise side. And Bastion Cricket Academy, let's go through their squad. They're playing 11. They've got Harun Khan, Junaid Qazi, Salim Dar, Zaid Ibn Nazir, and Farhad Sajjad Sir, and Robbie, Akib Manzoor, Adil Faizan, and Adil Zahur is in the playing 11. These are the 2 teams for you guys. Stay back, hold on and stay back. Just wait the match passionately and get this lovely coverage coming your way through JK Sports Time. जी बिल्कुल, और हारून एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे नए ओवर की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद, अच्छी गेंद इस बार पैड पे लगी। हालांकि हल्का सा प्रश्न पूछा जा रहा है अंपायर से, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, नकारा बगैर, हालांकि 1 रन पूरा कर लिया वहां पर लेग बाई के रूप में, 1 रन और खाते में जुड़ता, और संभवतः 148 15वां ओवर संभवतः इस समय पारी का चलता हुआ 148 रन बना लिए हैं मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। मुन्ना शेख, सुहेब
गुलजार के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। और आपको याद होगा कि ये दूसरा सेमीफाइनल और यहां से विजयी टीम एतवार को भिड़ेगी अलीजाना क्रिकेट क्लब के साथ, जो पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। इस बार हार ऑन की ये गेंद और बार लेग स्टंप पर, हालांकि इस बार गति में परिवर्तन खेला जरूर जब तक उसको अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते, क्षमा कीजिएगा, जब तक खुद गेंदबाज फ्री करते, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ 146 2 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद अशरफ भट्ट मकाया जां के साथ आबिद मुगल। लगातार सभी व्यूवर्स का, जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ बने हुए उनका स्वागत करना चाहेंगे और अपने व्यूवर्स से क्षमा भी चाहेंगे कि अगर कहीं पर किसी व्यूवर का यहाँ पे कमेंट हम ना पढ़ पाए, स्किप होता हुआ होगा तो कहना चाहिए कि क्षमा चाहते हैं। लेकिन इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी तैनात, गेंद हाथ में और उसके बाद छिटकी और कहना चाहिए जीवनदान मिलता हुआ। इस प्रकार के अगर कैचेस आप छोड़ते हैं तो कहना चाहिए कि मुकाबला आपके हाथ से धीरे धीरे निकल सकता है। Well, it looks like that should have been taken, that should have been gobbled. And that was easy one, easy peasy, that should have been held. He puts down a juicy, and that catch goes down. This tells they're reeling under the pressure still. And look at the batting from Adil Bahadur and his colleague. Lefty and the righty does well. They have taken the toll of every bad ball, and that's why. Look at that one. The pressure is still on their nerves, and he put down a lollipop, a juicy one gone down and put down by the fielder there at long off area. To be precise for the lefty, it was long gone. जी बिल्कुल, और कहना चाहिए कि शुरुआत जो आपको एक मिली, मजबूत और ठोस आधारशिला मिली और जिसके चलते इस समय दोनों बल्लेबाज संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं। इस ओवर में अगली बार हारून किए गए तो ऑफ स्टंप पर हालांकि खेलना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली और शेष कार्य पूरा किया विकेट की बजाय। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 150 2 विकेट के नुकसान पर और लगातार एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर समय टीम बर्ड इंटरप्राइजेज की बॉस्टन क्रिकेट अकेडमी की। Once again, I would definitely love to interrupt you. Credit must be given to the Bastion Cricket Academy. They were under the serious pump and they have been able to hold back and they have dented the confidence of the batting side. We're into the 15th over, they're still 150. So that means they can only go to 200, not beyond that 200, and that tells the bowling side have done really well in this very passage, in this very quarter finals from 10 to 15. जी बिल्कुल, और जहां से अगर आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं तो एक प्रभावशाली गेंदबाज हो सकते हैं। लेकिन उसी बार खेल दिया गेंद को सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, जैसे ही हम चर्चा कर रहे थे और बिल्कुल जैसे कि बल्लेबाज ने हमारी बात सुन ली और बेहतरीन स्ट्रोक। Simply say that commentators curse once again continue. We were just praising their talent, their team, their teamwork, and it has been well said, teamwork makes the dream work. But look at that. How dreamy was that? That's gone all the way for 6 and swivel, a little swivel on it succeeds and down towards the backward scale. 6 more and their score propels to in excess of in vicinity of 150s, and that tells the next fives which are coming your way. I'm talking of the batting side. They would definitely love to cash on with such kind of big shots, but to a larger extent you have to give credit to the bowling side. जी बिल्कुल, 15 ओवर पूरे हो चुके हैं, करीब करीब 160 रन बना लिए हैं और कहना चाहिए आखिरी 5 ओवर बचे हैं तो कितने रन यहां से बटोरना चाहेगी टीम। और जिस प्रकार से हमारे सहयोगी इंग्लिश कमेंटेटर मुनव्वर भाई ये स्पष्ट कर चुके हैं कि यहां से प्रयास जरूर होगा कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरें। Nazir, you're trying to understand that what's going on at the moment is because of the humid climate out here at the sun. He's still sweating it out and trying a level best. Wrapped him on the pad, he wheels that one on his pad, shot for LBW, one be given, and Sophie Ibrahim is talking about that and talking about the drop catch that's gone down. That should have been goal, that should have been taken, but he put down the dolly and there is addition to the tally. Ishtiaq Rabi comes back into the attack and on strike is lefty, Irfan lefty is still unbeaten out there. It is Imtiaz lefty, he is still out in the middle and alongside him his colleague Aqib Bikka, and you can see that Bikka, is he carrying a sting like Scorpio? जी बिल्कुल, और देखना है किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। अच्छी गेंद इश्तियाक रॉबी की, हालांकि टप्पा खाने के बाद उपेक्षा से ज्यादा उछलती है, बल्ला जरूर चला लेकिन गेंद की लाइन में पूरी तरह से अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाए और गेंद छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, बिल्कुल स्टंप से सदे विकेट कीपर। अच्छी गेंद, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, इस बार भी बल्ला चलाया लेकिन रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया। स्कोर अभी भी टिका हुआ करीब करीब 154, क्षमा कीजिएगा 154 और 2 विकेट के नुकसान पर लगातार। और कहना चाहिए कि इसमें बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए दोनों बल्लेबाज, चाहे वो इम्तियाज लेफ्टी और उनके साथ
इरफान बिक्का, इस बीच इश्तियाक रबी की गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से लपेट कर खेला, गेंद जा रही है दर्शक बीरगांव में और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, जिस संभावित तौर पर ये 6 रन शायद, लेकिन हालांकि अभी वहां पे इशारा नहीं आया। जी हां, अब आता हुआ और संकेत 6 रनों का, तो 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 160। मात्र 2 सफलताएं अभी तक हाथ लगी हैं बास्टन क्रिकेट एकेडमी के। Well, that's a wonderful shot. Kneels down on one leg and sweeps this one in the air, aerial all the way down to the boundary. Ishtiaq Robi was looking at the fielder there at the fine leg area. He was just trying to look at him and how he's going to operate and how he's going to react to that one, that aerial shot. That's another aerial, but 1 second it goes down and it falls in no man's area. So now I'm done, another run added to the tally. In excess of 160 for the loss of 2. We're in over number 16 of the match. This broadcast is coming to you live and exclusively from Shalbugh Sports League. This is semi-final number 2. Alijana is the other team. They have made their way into the grand finale of Shalbugh Super League 2022. जी बिल्कुल, और देखने ना भूलिएगा जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से वो सीधा आकर्षक और क्रिकेट का वो महा बुखार जो है वो सीधा आप तक का पहुंचेगा। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से इस एतवार को एक आकर्षक और बड़ा मुकाबला होगा और देखना ना भूलिएगा। सीधे जुड़ जाइए हमारे साथ एतवार को ठीक दिन के 11 बजे। Well, a short pause in the game and call to prayer is going on. We're going to take a short break. We shall be back. Don't go anywhere, don't fade away. Just be back to this way and let's find out some intriguing cricket coming your way. We'll be joining you back after the call to prayer. जी बिल्कुल, अजान का समय है और अजान के समय के बाद दोबारा आपके पास लौटेंगे। तब तक का हमारे साथ बने रहिएगा। Assalamu alaikum and back live. A short pause due to the call to prayer and back live with this wonderful inning number 1 coming your way live and sports time. This broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, Anthem Sports India Fashion Pista, Shining Star Pumper, and amateur multi-fashion brand with one slip in place, bit wideish, then gully, then backward a point. Mid off and bowler Naveed is going to operate, I think so. And we'll have to wait and watch. It is awkward occasion and he just takes that one out, but quality delivery from the pacer right into the black hole and he just manages to keep that one down and out. No harm done, score remains.
जी बिल्कुल, आकिब है गेंदबाज और सामना करने के लिए तैयार हैं भिक्का, और किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। आखिरी ये 2-3 ओवर बचे हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश होगी। हालांकि यहां पर खेला 1 रन पूरा कर रहे हैं और यदि स्टंप्स पे सीधा थ्रो लगता तो खतरे में पड़ सकते थे। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 164। 2 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स से हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे और उनसे अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधे प्रसारों को शेयर करें ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुड़कर इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का आनंद ले सके। कांटे की टक्कर का यह मुकाबला हालांकि पहली पारी इसमें प्रगति पर है। पहली पारी चलती हुई बोर्ड एंटरप्राइजेस की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है। अब तक 164 रन बना दी है 17वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर इम्तियाज सामना करने के लिए तैयार आकिब का, और इस बार जगह मिली। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी तैनात, हालांकि उनकी पहुंच से बाहर और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 170 रन 17वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। क्या कहना इस जोड़ी का, आकर्षक विश्वसनीय प्रदर्शन से बीच मैदान में चलता हुआ। Well, Big Kane and Imtiaz lefty, the two batters. That was a half tracker and that has been played to perfection. Wonderful shot, 6 more, another one in the same direction and same result. And look at that one. They saw that and they were lost. And look at that one. He has started showing his colours, but that was a wonderful shot, played to perfection all the way, and that brings a 176. And look at that one, almost gone some 15 rows back onto that portion. जी बिल्कुल, बडगाम एक्सप्रेस है इस समय गेंदबाज, हालांकि बेहतरीन बल्लेबाज क्षमा कीजिएगा, और जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या दर्शनीय स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं और आज पूरे दर्शकों का उन्होंने मन मोह लिया जिस प्रकार से अभी तक बल्लेबाजी हुई है। Somebody writes in Abid Miran, exactly. You're right, but that's a wonderful. Oh, that's a wide delivery. He tried to bowl that outside the off stump. He tried to bowl way outside the off stump because he looked at the batsman. He tried to follow him. The batsman was looking to go a bit leg side. He wanted to open up the offside, but that's a wide delivery. Way outside the off stump and umpire single. That's a wide. There was addition in total 177 for the loss of 2. 177 और इस बार फिर लपेट कर खेला, हालांकि वहां पर खिलाड़ी है, इस बार खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और कुल योग पहुंचता हुआ 178 रन 17वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में दूसरे सेमीफाइनल में, और आदिल बॉर्डर और इरफान लेफ्टी ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज इस समय पवेलियन जा चुके हैं। बीच मैदान में अगर बात करें, आके भिक्का इस समय सामना करने के लिए तैयार है। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के से सिर्फ दिशा भर दे दी, वहां पर खिलाड़ी तैनात सीधे स्टंप्स पे। One more bites the dust and look at that one. This isn't a good move from the batter there. He didn't try to save himself. Look at this man, suicidal. And look at this. This isn't a kind of energy you need in an athlete all the day. And you need someone who stays agile like a cat. And look at this man. He showed that lackadaisical approach. Doesn't try to save himself and directly field at short fine. He hits the bullseye, and Umaid Urfi and Dilbar Tarek and Lon Firdaus. Thank you all the beloved. Thank you for joining us on Dig Sports Time belatedly this afternoon on this very sports poll, where you're getting some wonderful coverage from this very center. Arco Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, trying to and Shining Star Pampur and amateur multi-fashion brand, and these are the beloved viewers who are sending us the comments. Lone Firdaus, Dilbar Tarek and Umaid Urfi, and all of we wants to convey that all the beloved viewers, thank you for your love. And Malang Shamim writes, it's your love which keeps myself on my toes to provide you the live action time and again. And Manzoor Ahmed writes in, superb. And Mohammed Al Tabar, all the beloved viewers, thank you for joining. A short pause in the game. We'll have to wait and watch who's going to whack in next. But Nazir, this match is once again proving its worth, and it is clarifying itself that I am the game of glorious uncertainties. Well, Haris is the newcomer who whacks in Nazir. Once again, I was talking about that, the game of glorious uncertainties. And you can't say anything until the last ball is non-bowled. This is cricket for you. And look at the cricket at its best. This is something special coming your way. Join us. Don't fade away, because you're
you're gonna miss something special because this is a big match. And Paul King writes in, send us as the stars. Thank you for your love, and JK Sports Time is indebted to your love time and again. जी बिल्कुल, और इश्तियाक रॉबी के हाथ में है गेंद संभवतः पारी का 18 ओवर लेकर के, और जिस प्रकार से नए बल्लेबाज का आमंत्रण हुआ करीज पे किस वारिस और किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करेंगे। आकर्षक मुकाबला होगा। आखिरी ओवर जो है हारिस है, बल्लेबाज हारिस संगीन के लिए ये गेंद, हालांकि इसको खेलना चाहते थे, पूरी तरह से वहां पे अस्त व्यस्त कर दिया और पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। हारिस जो कि इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे खड़े हैं, और बिक्का जो है इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी करते हुए, और आखिरी 2 ओवर्स में कितने रन बटोरेंगे। इसी बीच यहाँ पे रॉबी की ये गेंद खेला जरूर, पीछे है खिलाड़ी, जब तक उसको फीड किया जाता, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता करीब करीब 179। Thank you, Malang Shamim. These are the wonderful viewers at JK Sports Time. You are the family members, and don't worry, we will never discourage you. We're never gonna throw cold water on. We definitely love to wake you up, warm you up, and join us every day. That's a door delivery on that occasion, outside the optimum, in that channel, in that corridor of uncertainty. Lone for those, he says, big man Robbie. No doubt, I will agree with you 100%. This is the big match player. And join us for all the fun. And look at that shot. Has that gone all the way? No, it doesn't. Phil comes around in time. He feels that one with ease. And both the batters scamper through for a single, and that single takes the score to 179 for the loss of 3. We are in over number 18. Malang Shamim and Mohammad Akif, thank you. जी बिल्कुल, और एक बार फिर अपने व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे जिस प्रकार से अपना प्यार और विचार देते हुए इस बार इस गेंद को खेला, और संभवतः 2 रन वहां पर पूरे कर लिए। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 181। Well, Mohammad Akib writes, and it's a kind of contrasting character. You need to work on your basics first. Don't say that. It is something different, but you should understand at your level best. Paul King and Athar Pandit and Jigar Abid and Soil Bath, thank you all the beloveds. Thank you for joining us. And Amir Pandit is watching, and that's in the air. Will this be held? Oh, wonderful grab, one-handed, blind, unbelievable. Nazir, what are your comments about that one? Wonderful take, unbelievable, dipping low, and he holds on to the ball. Wicket number 4 goes down. बेहतरीन कैच, और उस दिशा में आकर के एक हाथ से इस कैच को लपकना मैं समझता हूं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और स्पष्ट करना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का कैच यहां पर पकड़ा है इस क्षेत्ररक्षण ने। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम, और तीसरे विकेट को किया यहां पर चलता, चौथा क्षमा कीजिएगा, चौथे विकेट को चलता किया बोर्ड्स एंटरप्राइजेज की और जेके स्पोर्ट्स। Rahman and all other beloved viewers, we're really and this adds kind of favor to all of the guys in the comment box. Thank you for joining us, and do join us for the chase which will be brought to you on the Sam channel this in a short while from now. But don't go anywhere, don't fade away. In the game, this broadcast is brought to you by Arco Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, Anthem Sports India, and those windows are being used in nowadays, and then followed by Fashion Fiesta, Shining Star Pumper, an amateur multi-fashion brand. And let's see, we got some time to talk about today's match. जी बिल्कुल, 181 पे 4 नए बल्लेबाज उमर आए हैं, और देखना है वे किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि अब आखिरी के ओवर बचे हैं, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, हालांकि चौथा विकेट अभी गिरा है, लेकिन विकेट्स का महत्व नहीं है क्योंकि आखिरी ओवर इस समय बीच मैदान में चल रहे हैं। संभवतः यह 18वां ओवर प्रगति पर, और यहाँ पे एक सफलता दिलवाई इश्तियाक रॉबी ने संभवतः, और जिस प्रकार से कैच किया वहां पर खिलाड़ी ने, जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम। लगातार हमारे well, somebody writes in, I really appreciate you guys. Whosoever writes in, we have to welcome all the comments, be it the positive or be it the negative, and we would definitely love to thank all the beloved viewers. And but for your kind information, this is the wonderful sports portal, and which is providing you the wonderful coverage time and again. Walaikum salam, Iqbal Bhatt and others. Thank you for your love. Leave that aside. Coming back to the game of cricket, which is really at its best. Look at the bowler, he's charging up a bit, he's gonna bowl the next ones. Score man's 177 for the loss, 182 for the loss of 4 in over number 90.
182 पे 4, ये है अब तक का स्कोर। और पारी का 19वां ओवर इसमें शुरू होने को है। पहली गेंद आज बाहर, अच्छी गेंद, हालांकि खेला जरूर भीतरी किनारा लगता हुआ, वहां पर कहना चाहिए थ्रो जरूर लगाया, लेकिन अगर स्टंप्स पे लगता तो खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुरक्षित क्रीज में 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 183 रन 19वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर बर्ड्स एंटरप्राइजेज की टीम इस दूसरे निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में, जो कि शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत ये सफल प्रतियोगिता बीच मैदान में चलती हुई, और ये ऐतिहासिक खूबसूरत मैदान अगर बात करें आप इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ। ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद, हालांकि उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन खुद अपने फॉलो थ्रू में फीड किया बॉस्टन क्रिकेट एकेडमी, जिन्हें कि आज क्षेत्र रक्षण का न्योता मिला है। और अभी तक जो पारी चल रही है बर्ड्स एंटरप्राइजेज की, और बेहतरीन प्रदर्शन इस समय कर रही है। 183 रन बना ली है 19वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर। आकर्षक, विश्वसनीय और निर्णायक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। Well, Iqbal Butt, Shabir Ahmed, Shaukat Ahmed Miran, all other beloved viewers, thank you for your allow. That's a good shot play, driven straight to the fielder there at mid-off. We'll get a single nonetheless. Iqbal Butt writes in something, and Munir Lawn is watching. Alongside him, Zuhur Ahmed Khan. There is addition in total. Score moves to 184 for the loss of 4. We're in over number 19 of the innings. Zuhur Ahmed Khan and Sahil Fayaz, all the beloved viewers. You can understand what's going on here in the com box. We're sweating it out. Believe me. And Iqbal Butt writes in something, and has knocked him over, cleaned him up. Middle stick is uprooted. Wonderful delivery, peach, and coming into the batsman, castling him, clean bowled, and has bowled him on the occasion. Wonderful delivery coming into the batsman. Another one bites the dust. Nazir at the fag end of the innings. जी बिल्कुल बेहतरीन गेंद, और पूरी तरह से, हालांकि कहना चाहिए कि उस दिशा में फेंकी हुई गेंद, आवश्यकता का गलियारा जिसे कहा जाता है, उसमें फेंकी हुई गेंद, बल्ला जरूर चलाया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, और गेंद सीधे चूमती हुई स्टंप्स को। तो 5वां नुकसान इसमें बल्लेबाज को किया चलता 184 पे 5। हालांकि ये पारी का 19वां ओवर प्रगति पर, और कहना चाहिए आधी टीम पवेलियन जा चुके हैं। अंतिम क्षण इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले की पहली पारी के। Well, Aru Shakir, he isn't playing today. Yawa writes in, score is 184 for the loss of 5 wickets. Half of their team is back into the dugout, and new man walks in is Ishfaq Shah. And I remember there was a player at International Arena, namely Uvaisha, and I love to throw out these names, followed by Shah and Sagar Altaf, Sahil Fayaz and Vani Shokat. These are the beloved viewers watching this live coverage. We are in over number 19 of the match. Next ball coming up, wrapped him on the pad, shot for LBW. He believed that he got his man, but in the end that wasn't so. In the middle, there's a chance of a run out, but in the end a weathered shy comes in that allowed the two batters to scamper through for Brace, taking the score to 186 for the loss of 5 wickets over number 19 in progress. बेहतरीन प्रदर्शन, हालांकि यहाँ पे जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम नकारा अंपायर ने, और 1 रन खाते में जोड़ते हुए लगातार अंतिम, हालांकि ओवर इसमें बीच मैदान में चलते हुए ये गेंदबाजी, और सामने है बल्लेबाज इस बार। अच्छी गेंद, हालांकि उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, 1 रन पूरा करेंगे, 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 186 संभवतः 187, क्षमा कीजिएगा 187, 5 विकेट के नुकसान के। Well, Zaidar is in their side. जी बिल्कुल, और जाहिरदार मुकाबले में खेल रहे हैं, वो इस टीम में हैं, और जिस प्रकार से अभी तक बल्लेबाजी हुई, कहना चाहिए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। हालांकि 187 रन हो चुके हैं। लॉन फिरदौस, शेख बशीर, पीर आमिर लगातार हमारे साथ बने हुए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। Lone Firdaus believes Adil Zur is going to be the man of the match for today's match. Only the time will tell us. We can't say anything. Let's wait and watch. Hold back and watch the match. Observe keenly and find it out alongside us. जी बिल्कुल, आखिरी ओवर, इश्तियाक रॉबी के हाथ में गेंद, पहली गेंद को खेला, हालांकि खिलाड़ी थोड़ा पीछे नो मैंस लैंड में गिरती हुई, और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 188, 19.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 विकेट के नुकसान पर बर्ड्स एंटरप्राइजेज की टीम पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हैं निर्णायक दूसरे सेमीफाइनल में, और यहां से विजयी टीम जो है वो फाइनल में प्रवेश करेगी। इस बार ये गेंद ओवर के लिए, और उसको उठा दिया, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, नीचे खिलाड़ी लेकिन उनकी पहुंच से बाहर, और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, 6 रनों का इशारा। Definitely love to take the comments from our beloved viewers. What do you think? What will be the final destiny of the batting side? What do you think? What will be the safe scope for their side?
and what's going on in your minds at the moment, and what's cooking inside you. Do drop your comments and write us what will be the sip scoop for today's match. जी बिल्कुल। और इस समय अगर बात करें 193 रन करीब करीब हो चुका है स्कोर। उमर है इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी, ऑफ स्टंप पर जगह दी, कोई मौका नहीं और गेंद दर्शक बीरगांव में जा लगी है। 6 रनों का इशारा। जी हां, 2 गेंदों से 2 छक्के इस आखिरी ओवर में और गेंदबाज इश्तियाक रॉबी इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 199, 200 के करीब पहुंचता हुआ। इस बार तीसरी गेंद पर हालांकि उठा दिया हवा में गेंद, लेकिन जब तक खिलाड़ी उसको फील्ड करते हैं मिस फील्ड का नतीजा दूसरा रन भी पूरा कर लिया और इसके साथ ही 200 रन पूरे। 201 पे 5 यह है इस समय पहले सेमीफाइनल के 20वां ओवर प्रगति पर और 200 को पार कर चुकी है बर्ड्स एंटरप्राइजेस की टीम इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में बास्टन क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। Well, Ishnaq isn't playing in this very team, and this time switch it. Oh, wonderful shot! Gone all the way, a sweeper cover, 6 more. Superb shot, neatly done, nicely done, a kind of a surgical precision. Look at this man, switch it. And this isn't only destructive, but this is really unbelievable. And this is Umar Gudu at his best. जी बिल्कुल, उमर गुडू के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का ये तीसरा छक्का। क्या बेहतरीन प्रदर्शन और गेंदबाज है इश्तियाक रॉबी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन इन अंतिम ओवर में और स्कोर को पहुंचा दिया 207 संभवतः 207 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इश्तियाक रॉबी इस ओवर में अगली बार और बार फिर कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी लेकिन गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और इसके साथ ही 20 ओवर की पारी समाप्त। 214 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 20 ओवर में। ये जानकारी देते हैं कि आकर्षक मुकाबला। Rashid believes the 360 Umar Gudu, wonderful innings. An enterprising, what a cameo at the fag end of the innings, and he has taken his side to some sort of respectability. They have now 214 runs to win this one and to seek berth at the grand finale, where Ali Jana is really waiting them, and they're eagerly waiting with ravish feasting, guys, for that wonderful final, which will be brought to you by JK Sports Time on Sunday. Join us for that very fun. But now, as of now, we definitely love to bid you adieu and goodbye. We shall be back in a while with the chase of Bastion Cricket Academy. Their guns are gonna roar here at the centre. They need 214 to register victory and to seek berth in the grand finale. That's all we have for you from this very inning. Join us in a short while.